Good evening, everyone. It is such a pleasure to be at the MRSI Golden Key Awards, a platform that celebrates insight, excellence, and the relentless pursuit of understanding people better. Today, we are in conversation with someone whose journey, in many ways, mirrors the very values we honor here. Vikrant Massey is one of India's cinema's most compelling and versatile actors, known for his nuanced performances and powerful screen presence. With a career that reflects depth, authenticity, and a fearless choice of roles, Vikrant has consistently pushed the boundaries of storytelling, the very way many of us build great research, patiently, thoughtfully, and with deep respect for human truth. From his early days in television to powerful performances in films like A Death in the Gunj, Haseen Dilruba, and most recently 12th Fail, his trajectory has been not about overnight stardom. It has been about craft over noise, conviction over convenience, depth over display. In an industry often driven by spectacle, Vikrant has consistently chosen stories rooted in authenticity, stories of ordinary people, quiet resilience, modern complexity, and aspiration against the odds. And isn't that what research does at its best? It uncovers the human story beneath the headline. It observes deeply. It finds meaning where others might overlook it. 12th Fail especially struck a chord with the nation, a reminder that failure is not the opposite of success, but the very foundation of it. That grit matters, that perseverance matters, that staying the course matters. A quiet force in Indian cinema and a national award winner for Best Actor, Vikrant Massey stands as a testament to talent, resilience, and the transformative power of sincere storytelling. From a room full of professionals who decode behavior, track change, and interpret the pulse of a rapidly evolving India, tonight's conversation is about more than cinema. It is about resilience, reinvention, and the courage to choose the long road. Please join me in welcoming an actor who has redefined what it means to be a leading man in contemporary Indian cinema. Ladies and gentlemen, presenting to you Vikrant Massey. All right, Vikrant. Thank you so much for joining us today. It's a pleasure to have you. Check. Oh yeah, it's working. Firstly, thank you so much, Shefali, for such warm and kind words. And thank you to all the leaders here for sparing your time. Thank you for having me here at MRSI. It truly is an honor for me to be here. And as much as I'm going to be sharing a lot of my life with you, I'm sure there will be a lot that I will be taking home with me, learning from some of the finest minds, some of the finest researchers under the roof here. So thank you so much for having me here. The honor is truly mine. Thank you for having me here. Thank you. Awesome. Great. Can't wait to get started, Vikrant. I think would be great if you could start by telling us a little bit more about your early childhood and what has really shaped your dreams. I'll try being honest, right? Absolutely. That's the idea. And so I come from Bombay, Mumbai. I come from a very regular middle class family, a nuclear family of I have an older brother. So my parents took hum do hamare do very seriously. So it was just the four of us. When I started off, I don't know how many of you know, I started off at the age of 16. That's almost 22 years ago. And I hope most of you would agree that very, very seldom do you come across someone who has to step out of the house at that age. Circumstances were as such. That was the need of the hour. And I decided to just take it on my chin and adapt. So the idea was survival. And I think that is that primal instinct that all of us have, that come what may, we will adapt
and we have to survive. So I started off at the age of 16. I did a few menial odd jobs here and there, but my first big acting break came at the age of 17, just a year after I left home. And the reason why I stepped out of my house was to support my own education. I was about to enter college, in my first year junior college, and I just didn't want to sort of pressurize my father. I just thought, I am capable enough of going out there and fending for myself. So at the age of 17 it came along, और उस time पे इतनी समझ होती नहीं है, right? The reason I took up that job was from 800 rupees a month, when I was offered 6,000 rupees a month, I immediately decided कि अच्छा चलो भी acting करते हैं. But I'll also be honest with you, I come from an area in Mumbai called Versova. I don't know how many of you know of Versova. So while I was growing up, Shefali, I saw a lot of movies being shot in and around my house. And I was one of those little kids with my older brother who always, would be standing in the crowd watching Anil Kapoor, Jackie Shroff, all these guys shooting action sequences there. तो एक्टर तब भी बनना था, बट क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो ये था कि ग्रेजुएशन कर लेना, और तभी तो बीपीओ इंडस्ट्री का बहुत चाहिए था. सो मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स ओवर इन FYJC, SYJC, they were working in Orange, they were working in all these call centers in Mindspace. तो ये था कि यार चलो ग्रेजुएशन करके एटलीस्ट कॉल सेंटर में नौकरी तो लगी जाएगी. But God willing, my first TV break, as I said, came at the age of 17, and it was not until when I was 20, 21 that I actually started taking the privilege very seriously. And yeah, and then after 3-4 years of work, I realized that I'm really blessed. Really, really blessed, because by the time I would have actually finished my graduation, and actually I wanted to go to NSD. I thought, most of the actors I looked up to, they were NSDs, they were from the Pune Film Institute, वहाँ से थे, FTI. But I'm glad that I took that job at the age of 17, because by the time I was 24, 25, I had almost had a decade of on-ground experience. And and here I am at MRSI, sharing my life with you. So that's a little bit about me from where I come Wow, from. that's truly inspiring. I mean, just hearing your story from where you started, it's truly amazing. Today, sitting next to a national award winner, it's really something. I mean, you started your career in television, you mentioned, and you've built your journey to cinema and achieving the pretty much the pinnacle there, is what I would say. At what point did you feel your journey was overwhelming, when you started realizing what you're up against, and there are years when you don't get recognition, right? It doesn't come easy. You all know that. And when that was limited, how did you go about the effort? I think to begin with, you're absolutely right about recognition coming not so easily, especially in cinema. And I would say the same about sports in our country also, because of our obsession with sports, cricket and Bollywood, right? But the idea is to persist, right? And I would sort of hope that most researchers here who are actually the unsung heroes, like you so rightly said, वो पर्दे के पीछे लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं, but उनको वो एक so called gratification जो दूसरे सेक्टर्स को मिलती है, वो इतनी आसानी से नहीं मिलती. The idea is to be persistent and back yourself. Like I said, the idea was survival. That primal instinct does not leave you. And there was one tipping point in my life when I actually sort of felt like there was a lot of introspection about the choices, about the way ahead, was when I quit television intentionally. Very, very well knowingly that, okay, I've done decently well in television, almost a decade of work. If I may say so, at the cost of sounding pompous, that I did Balika Badhu, one of the most popular TV shows, and but I honestly felt very underutilized at that time. I felt very underutilized, and I was not subscribing to
the parts that I was playing or the story that those unfortunately regressive television shows wanted to say through me, I was not really happy. So the journey actually started off wanting to fend for yourself. And by the age of 24, after 8-9 years of work, 24, 25, when you realize that, great, you've done well for yourself, but I think integrity, that strength of character and the potential within you actually, which only you know of, that is not coming to its complete fruition. So that was the time when I went up to my parents and I told them that, okay, I want to try my hand at acting in movies. And when I started all over again, it nearly took me 6-7 years of playing peripheral parts in movies to land my first main lead. But I think that's also the kick of it, right? I mean, wo jo nasha jaise bolte hain, unless and until you take those chances, and we all very well know we are all a byproduct of the choices we take. It could have gone any other way. It could have very easily gone, down south. But the moment you back yourself, and like you so rightly said, there were moments when things didn't go my way. And failure is the beginning of success. I think you cannot define success as just a standalone concept. So there were moments of ups and downs, but the idea was to persist and back yourself. That's amazing. And capitalize on the opportunities given. Because I very well remember when I was, just take a minute more. When I got those 8 scenes in a big movie, hero ke dost ka role ya heroine ke dost ka role, my idea was, what can I do in those 8 scenes? How can I stand out? And how can I also be honest? How can I also connect with the audiences watching me either on their TV screens or either in cinema hall? The idea was to break their defense mechanism and probably make them feel that I am one of them. And that continues to be my aspiration even today. That's really amazing because you speak about authenticity, how you really wanted to be so honest in front of screen. I know there's a preparation process that you may be going through. If you could just walk us through a bit of that, it would be really fascinating because as researchers, we try and decode that pretty much every day, human behavior. How do you go about that? There is definitely a process, Shefali, but no two films require the same prep. Exactly. Different characters, different stories. They require different preparation methods. But yes, there are a few things which, for the lack of a better word, I might say, the value system of your approach or the DNA of your approach. And one of them I just shared, which is to sort of break through people's defense mechanisms, break through people's barriers, and make them feel or evoke a sense of emotion within them when they see my character कि अच्छा मैं शायद इसको जानता हूँ और अगर मैं ये कर पाऊँ कि अच्छा ये मैं हूँ तो उससे बेहतर क्या ही हो सकता है. Because I also very strongly feel you guys are analysts, you guys study human behavior, human emotions, and I hope you can correct me if I'm wrong, that we all tend to have very strong facades, right? All of us. But sometimes we tend to, or especially at work, or we're wanting to put up a pretense, we wanting to put up a face. But deep down, I think all of us are brothers, all of us are sons, friends, humans first. Sometimes we unfortunately tend to take our professional identity as the only identity, and that happens sadly, unfortunately, very often with sportsmen, with politicians and actors. लोग ये सोचते हैं कि आप सिर्फ एक एक्टर हैं, बट वो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है. I'm also a father, I'm also a husband, I'm also a son. So if I can connect with you on those parameters, I will have done my job decently well. That is the idea, because all of us are somewhere down the line. चाहे आप CEO हो या चाहे आप कोई janitor हो या कोई मेरी तरह कोई dreamer है, we are all hanging by that single thread of hope. We all want to live dignified, meaningful lives. What is the purpose of life is one of the most
ancient yet unanswered questions in humanity, I may say. So if I can find some purpose, or if I can try utilizing that privilege that I have, I definitely recognize the privilege. If I can be the voice for the voiceless, if I can connect with one of those 16-year-old Vikrants through the stories I say, I feel I will have done my job. So that is more or less my preparation method. That is one thing that stays common. Fantastic. Yeah. Fantastic. And does that also define the way you choose your scripts or the way you make your choices and decisions? Is that a part of what guides you towards that, or? That's the core of it, of course. What am I leaving behind? Cinema again is such a wonderful medium. You know, it's not just influential, but it's so impactful that the movies or the stories, like most art forms, will outlive me. And there are certain things which will always stay the same, right? So if I can inspire people, if I can inform people, if I can, as I said, if I can be the voice for the voiceless, that remains the most important thing. Of course, every now and then you do an entertaining film, a mindless entertaining film, because you are in the business of entertainment. But at least a couple of films in a year, I try finding some meaning in it, something that really sort of excites me. And also, then there are so many other things which are concomitant as to why you are taking up a film. Director kaun hai, actor kaun hai, you know, co-actors kaun hai. You also sit back and analyze, because it's so important in the world of social media and PR today कि लोग मुझे किस तरह से देखेंगे, तो वो भी ज़रूरी है, बट वो बहुत ही एक छोटा सा हिस्सा होता है. If the soul of the story is right, then I think all of these peripherals are well taken care of. So बहुत सारी चीज़ें होती हैं. That's amazing. आप मुझे बताएं, I'm shifting in Hindi because हमारी हिंदी में बात हुई थी, and I hope you guys are okay with it, right? Yeah, lovely. And I love listening to you in Hindi especially, तो इसीलिए मैं हिंदी में आपसे बात करूँगी. ऐसी क्या चीज़ है जो सक्सेस नहीं सिखाती पर फेलियर सिखा सकती है? I think strength of character. I think strength of character, मेरे ख्याल से, as I said, कि कामयाब होने के पहले वो असफल होना बहुत ज़रूरी है. और मेरे ख्याल से ये जो मैं चीज़ कह रहा हूँ, जो नेचर ऑफ लाइफ है, वो हमेशा ऐसा ही है कि, एंड वी ऑल्सो सीन कि ओवरनाइट सक्सेसेस के बाद भी there comes a moment when reality hits you really hard, and it gets very difficult to adapt at that point. तो मेरे ख्याल से strength of character and integrity is something which is very very important. वो असफलता ही सिखाती है आपको how to hang on, how to believe in yourself. And हमारे इंडस्ट्री में तो ये कहते हैं कि if you don't believe in yourself, no producer is going to believe in you. Why will the audiences believe in you? So yeah, you have to believe in yourself, but then also you have to be honest enough with yourself. क्योंकि ये एक चीज़ बहुत मैंने शायद I'm so grateful to God कि बहुत ही young age में मैंने ये सीखी. Again, maybe because of glamour and fame attached with the nature of my job. It's very easy to get swayed away by yes men around you. तो आसपास कुछ ऐसे लोग जीवन में होने बहुत ज़रूरी हैं जो भले वो दो हो, जो आपसे सच बोल पाए, जो who don't treat you for who you are but for what you are. Right? It's very very important. So strength of character is something which I will go back to that one thing which has to sustain if you want to leave behind something meaningful. And lastly, I journal quite a bit. I'm also inspired by a lot of quotes on Pinterest, like most of us are, in WhatsApp forwards. But this one thing which my mind was flowing while I was writing, and I went blank. Oh my goodness! I'll come back to it. Yeah, sorry, we can. No worries. आपने बात करी ऐसे दोस्तों की जिनको पास रखें
That's very important. I think I've heard that before. I think there's this saying which says good friends are those who stab you in the front. I think that's pretty much what it is. So you're right about If you हाँ sorry याद आ गया मुझे याद आ गया sorry याद आ गया मैंने खुद क्या लिखा था you know any substantial change is a generational sacrifice and a commitment. If you want to leave behind, because we are talking about brands, we are talking about lasting change. I mean, to each their own. If you want to, you know, get a quick in and out, I mean, ठीक है, you know, to each their own. But I believe that most of us here want to sort of, like I said, my cinema, my stories will outlive me. So वो लिखते लिखते ये ध्यान में मेरे आया कि any substantial change is a generational commitment. वो आपको 20 साल तो देने पड़ेंगे. अगर आप like you see some of the biggest brands you guys are working with, right? आप लोग खुद जिन कंपनियों में काम करते हैं, like from where you come from, I mean, it will outlive you, right? And yeah, so any substantial change is a generational commitment and sacrifice. So वो चीज़ मैं बहुत ही I keep reminding myself that every second day, because as it happens with most of us, complacency आ जाती है कई बार. You know, कई बार जब आप राष्ट्रपति मैडम के साथ खड़े होकर तस्वीर खिंचा के नेशनल अवार्ड लेके आते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे यार अब तो हो गया. But then you need your wife or you need those people who will pull you down and, you know, bring you back to reality. It's very important. तो 12th फेल के बारे में बात किए बिना this will not be complete. I have to talk about it. It is a story about resilience, and did playing that role or preparing for that role change or shift anything in you? Quite a lot actually. क्योंकि तैयारी हमने 1.5 साल की थी उस फिल्म के लिए. हमने शूट की थी वो फिल्म 3 महीने के अंदर, पर उसकी तैयारी 1.5 साल तक चली थी. And I completely accept and I concede to the fact कि जो challenges मुझे अपने जीवन में मिले वो भी किसी के लिए privilege ही था. And I always tell this क्योंकि जो मनोज कुमार शर्मा जहाँ से आते हैं या जो हमारे देश के गाँव से कस्बों से लोग आते हैं, उनके कंपैरिजन में मेरी ज़िंदगी जो थी वो तो बेटर ही थी. तो जब मैं वहाँ गया तो जब हम तैयारी करने लगे और जब फिल्मिंग हमने शुरू की, and I'm glad I did that film because, and I'll also tell you, most of the people around me at that point were telling me कि यार तू क्यों कर रहा है ये फिल्म, इस फिल्म में क्या है ऐसा. But Vinod Chopra and I think, and a few others, we really felt that it is an India story. ये भारत की कहानी है. ये हमारे जो मेजॉरिटी लोग हैं जो देश में जीते हैं, जो होप की मैं बात कर रहा था, ये उनकी कहानी है. So doing this film actually brought me closer to myself. It reinstated a lot of things which might have dissipated in my professional journey or otherwise. It really sort of brought me back to myself. And after the film release, I couldn't believe, you know what, कई बार अभी भी विश्वास नहीं होता है कि ये सब हुआ. But then it is a testament कि अगर आप ईमानदारी से अगर कुछ कहते हैं, और सिर्फ ईमानदारी नहीं, मतलब you know, ये भी एक ओवर अब्यूज्ड वर्ड है. मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि it is also belittling of other people. But the idea is कि if you are not compromising on your value system while making the film, क्योंकि मैं सिनेमा से जुड़ा हूँ तो मैं सिनेमा की बात करूँगा. कई बार ऐसा भी होता है कि फिल्म बाद में बनती है, पहले आप ये सोचते हैं कि फिल्म पैसा कितना कमाएगी और आप उन गिमिक्स को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं या वो गिमिक्स करने लग जाते हैं जो उस वक्त चल रहे हैं. And I really applaud Mr. Vinod Chopra for this because he refused to go out there and do the conventional things which people do. He said कि ठीक है यार. In fact, his wife, I have to share this with you guys. In fact, his wife, Anupama Chopra, she is a very revered film critic, and she was honest. And she said,
Vinod, why will someone come and watch your film and Vikrant's film in a cinema hall? He's an OTT actor. इसको तो लोग अपने घरों में बैठ के देखते हैं फ्री में. और वो सच है. He had not made a successful directorial in the last 12-13 years. He's been an extremely successful producer, but as a director, तो he quipped. He said कि यार कोई बात नहीं यार, अगर कोई नहीं देखेगा तो हम अपने फार्म हाउस पे बैठ के देख लेंगे, पर पिक्चर तो ऐसे ही बनाएंगे. And if you go back and if you see the kind of films that came that year, and for us to sort of go out there and resonate with people, I think is something which is going to be an everlasting moment. It is going to be something which will always stay with everyone who's been attached with the film for the rest of their lives. Because वो हमारी कहानी है. And I very strongly feel कि आज हम ये सूट बूट तो पहन रहे हैं, हम we've all done very well in our lives. पर हमने भी कहीं से शुरुआत की थी, हमने भी कहीं सपने देखे थे, और हमारी तरह आज भी वैसे लोग हैं. अगर हम उनकी कहानी बता पाएँ या अगर उनके दिल को छू पाएँ, या जो CSR में आप लोग करते हैं, अगर हम किसी के लिए कुछ अगर अच्छा छोड़ के जा पाएँ तो वो मीनिंगफुल लगता है थोड़ा सा, क्योंकि कुछ लेके तो कोई जाने वाला है नहीं यहाँ से. तो अगर उस चीज़ को अगर हम कई बार अपने आप को रिमाइंड करें तो आई थिंक इट फील्स लिटिल मोर पर्पसफुल, इट फील्स लिटिल मोर मीनिंगफुल. Absolutely, it does. I think that does go resonate with most of us. But I think हर जर्नी में, I mean किसी भी प्रोफेशन में, यहाँ पे हम सब बैठे, आपने vulnerabilities की बात की पहले. If I really go down, deep down, I think each one of us has had moments of self-doubt. How do you deal with that moment of self-doubt? What is your coping mechanism or whatever you call it? सबसे पहले तो अगर सेल्फ डाउट हो रहा है तो पैट योरसेल्फ बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग मोर ऑफ योरसेल्फ. बहुत से डिल्यूजनल जो ये स्लैंग है नया, मैंने भी सीखा है, डिलुलू इज द ओनली सुलुलू, राइट? It would be so sad that you are complacent in your life and you're not wanting to realign or sort of readjust or recalibrate. तो अगर वो हो रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है. दूसरी चीज़ ये जो मैंने पहले कही कि अपने आप से सच बोलने की क्षमता रखें. और कुछ लोग ऐसे हों आपके आसपास जो आपसे सच बोल पाए, चाहे वो पेरेंट्स हो या दोस्त हो या जो भी हो, वो बहुत ज़रूरी है. बिकॉज मेरा ये मानना है कि अधिकतर लोग जो है वो कुछ मीनिंगफुल करना चाहते हैं. मतलब आई वुड से मोस्ट ऑफ अस. तो अगर आप वो 10 साल जो मैंने क्विक बर्स्ट मैंने कहा था, 10 साल 15 साल में अगर आप करके जाना चाहते हैं तो ठीक है, गुड फॉर यू, अच्छी बात है. अगर आप सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं तो अच्छी बात है. मगर अगर आप कुछ एवरलास्टिंग करना चाहते हैं तो वो पिट स्टॉप्स की तरह आपको उन लोगों के पास जाना होगा. आपको अपने आप को आईने में देख के अपने आप से सच कहने की वो क्षमता रखनी होगी. तो वो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ है. And I would never get dejected because I still have moments of doubt. After 12th fail, I did a film which released in theatres and it was a washout. That film was off theatres in 11 days. And I sat back and I was like, यार ये क्या हो गया? अभी तो नेशनल अवार्ड लेके आए हैं, अभी दुनिया भर के अवार्ड्स लेके आए हैं, कोई आया ही नहीं थिएटर में देखने के लिए. बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनकी वजह से शायद फिल्म अच्छी नहीं थी, चाहे बहुत सारी चीज़ें होती हैं. सेल्फ डाउट तब भी आया, बट यू हैव टू बैक योरसेल्फ बिकॉज यू नो व्हाट यू आर केपेबल ऑफ. एंड yeah, I mean we can go on and on about this, but the basic thing is to be able to tell you, to speak the truth to yourself and have those people जो आपसे सच बोल पाए, जो अलाइंड हो आपके एस्पिरेशन के साथ, जो आपकी विजन और एस्पिरेशन के साथ अलाइंड हो, वैसे लोग होने बहुत ज़रूरी है. एक ये में कहें तो हमारी ज़िंदगी की कमाई भी है, ऐसे लोग जो हमारे पास, वही सबसे बड़ी कमाई है, वही सबसे बड़ी कमाई है. आई नो सो मेनी पीपल, आई एम सॉरी आई कट यू इमीडिएटली, जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं, हज़ारों करोड़ रुपए कमाए हैं, लेकिन वो सुकून की नींद नहीं सो पा रहे. तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी कमाई है. और सेहत जो है वो सबसे बड़ी कमाई है.
I'm sorry, I'll also quickly share one small anecdote with you. Absolutely. I was invited at IIT Bombay, for their Mood Indigo जो उनका program होता है. So I met a lot of these really bright young people, and they asked me कि what is the definition of success? तो मैंने बोला देखो conventional success का तो यही मतलब होता है कि ढेर सारा पैसा हो, तुम वो छुट्टियों पे वहाँ जा पाओ जहाँ तुम जाना चाहते हो, वो पहन पाओ जो तुम पहनना चाहते हो. बट कन्वेंशनल सक्सेस के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. सेहत सबसे बड़ी चीज़ है मेरे ख्याल से, और इसीलिए पिछले 20 सालों में माइंडफुलनेस की हम बात कर रहे हैं, वल्नरेबिलिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, ओपन पब्लिक डोमेन्स में मेंटल हेल्थ की हम बात कर रहे हैं, जो 20-25 साल पहले मेरे पेरेंट्स की जनरेशन को पता नहीं था. आज योगा की हम बात कर रहे हैं, जितने जिम आज खुल गए हैं आप अपने आसपास ही देख लीजिए, क्योंकि हमको अचानक से ये रियलाइज़ होने लगा है कि सेहत से बड़ी कमाई कोई चीज़ नहीं है. नाम नहीं लूँगा, बट आप लोग भी जानते हैं कि हज़ारों हज़ारों करोड़ रुपए लोग कमा के चले गए, 55-60 की उम्र में चले गए, लेके तो कुछ नहीं गए. जाते जाते भी उन्होंने ये कहा कि यार आई विश मैंने अपनी सेहत पर ध्यान दिया होता. तो वो बहुत ज़रूरी है. तो एक वो स्वीट स्पॉट जिसे कहते हैं, वो स्वीट स्पॉट ढूंढना जीवन में बहुत ज़रूरी है. एनी फॉर्म ऑफ एक्सट्रीम इज ऑलवेज गोइंग टू टिल्ट द बैलेंस ऑन दैट साइड. सो वो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से. That's true. Vikrant, we just met some time back, I know, but it feels like I've known you for a while. I think you have this power of creating that That's connection. so kind of you. Thank you so I much. really have to say, and I really want to know how important is empathy, especially in your craft. How important is that for you? I think it is the travesty of our times कि empathy lacking है, और ये सच है. मैं थोड़ा डिविएट करूँगा क्योंकि इसको समझाने का और कोई तरीका शायद है नहीं, क्योंकि ये सवाल मुझसे कई बार पूछा गया है. ठीक है, एज एन एक्टर वो एक वल्नरेबिलिटी, एक एम्पैथी होनी ज़रूरी है. आज हम ऐसे दौर में जीते हैं कि अगर हमें कोई अच्छा इंसान मिल जाता है तो हम घर जाके लोगों से कहते हैं कि यार वो कितना अच्छा इंसान है. काइंडनेस, जेनरोसिटी, एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग हैज़ बिकम अ रेयरिटी. इसीलिए हम जाके दूसरों से शेयर करते हैं, राइट, कि यार आज मैंने उस बड़े इंसान को देखा, मैंने इस कंपनी के CEO को देखा, वो अपने जैनिटर की मदद कर रहा था, वो तो बहुत अच्छा आदमी है. इसका एक नज़रिया ये भी है कि इट इज़ द ट्रैवेस्टी ऑफ आवर टाइम्स, क्योंकि हमें जो चीज़ें हमारे बाप दादाओं ने, हमारे घर की औरतों ने हमें बचपन में सिखाया था, ट्रीट पीपल विद रिस्पेक्ट, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, ये मत बोलो, जो हमारे फाउंडेशंस हैं, हमसे पहले भी थे, हमारे बाद भी रहेंगे, जो हमारे अंदर है, जो हमारा इंस्टिंक्ट है, जो हमारे DNA में है, उसको आज हम इतनी तवज्जो देते हैं. See, you have to adapt. There's no other choice. Right? When COVID struck, I mean, all of us drawing board की पता नहीं कल क्या होगा. तो life uncertain है. That is the basic nature of life. And you have to have the potential to adapt. But as an actor, is my output different on different mediums? Not at all. मैं कोशिश करता हूँ कि उतनी शिद्दत से जो थिएटर के लिए फिल्म बन रही है, या जो OTT के लिए बन रहा है, या जो TV भी मैंने जब किया, तो आइडिया ये था कि लोग मेरे काम को पसंद करें और मुझे इस काम से और काम मिले, क्योंकि हमारा काम ही हमारी शोरी होती है. The output does not differ according to the medium, but
every 2 years or every 3 years, I mean, you have to have the gumption within you to adapt and to unlearn a lot also at the same time. क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है जब कोविड हुआ था 2020 में, बहुत से लोगों को इस बात की चिंता थी कि ये थिएटर शायद खुलेंगे नहीं। मुझे भी बड़ी चिंता हुई, पर 3 महीने के बाद मैंने नेटफ्लिक्स के साथ 4 शो कर लिए, क्योंकि मुझे काम करना है, मुझे कहानियाँ बोलनी है, मुझे वो पैसा भी कमाना है और मुझे अपनी ज़िंदगी उस तरह से जीनी है जिस तरह से मैं जीना चाहता हूँ। सो अडेप्ट करना पड़ता है। जब ढेर सारे पैसे छोड़ के आपने सिनेमा में दोबारा रीस्टार्ट करने की कोशिश की, जो पैसा आप 4 घंटे में कमाते थे वो पैसा आप एक पूरी फिल्म में कमाने के लिए भी तैयार, वो भी अडेप्टेबिलिटी है। तो हमें सिर्फ अपने फ़ोन्स को अपडेट नहीं करते रहना चाहिए, जो सिर्फ फ़ोन्स के सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं, हमें अपने आप को भी अपडेट करते रहना चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है वो, क्योंकि हमें नहीं पता है कल क्या होगा। अभी तो माइक्रो फिल्म्स बन रही हैं, hundreds and thousands of crores are being pumped in by some of the biggest studios in the world, जो 10-10 मिनट की फिल्में बना रहे हैं, क्योंकि हमारा कंजम्पशन पैटर्न बदल गया है, क्योंकि हम अपनी गाड़ी में बैठ के रील्स देख रहे होते हैं और ये डेटा है। तो everyone is adapting. I think even as actors we also have to adapt, क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा है। हम तो सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के ज़माने से हैं। जब T20 आया था हम बोलते थे ये क्या आ गया, अब देखिए पूरे साल T20 चल रहा होता है। अब तो यूके में T10 भी आ गए हैं, तो अडेप्ट कर ही रहे हैं सब, यू नो। एंड इंसान है तो सबसे ज़्यादा अडेप्टेबिलिटी का जो पोटेंशियल है वो हमारे अंदर ही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली आप। अगर मैं कहूँ आप एक लेसन हमारे साथ छोड़ें अपनी जर्नी से, फॉर बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी, बिकॉज दैट्स रियली द रूट, द जर्म ऑफ आवर इंडस्ट्री। According to you, what would that be? यार आप लोगों को लगेगा कि यार एक्टर को बुलाया है कि कोई सेल्फ हेल्प बुक को बुलाया है। I think it stands true across professions. I think, you know, उसको मैं स्क्यू करके सिर्फ एक प्रोफेशन के लिए नहीं करूँगा। I think I've shared bit of it. You know, I think winning hearts is very important. Rather than winning contracts or, you know, winning bids or winning tenders, you know, हमारे यहाँ तो भी होता है। I think winning hearts is very important because I can only speak for myself again right now. I aspire to build a legacy brand. I like I said very briefly before, I know my work will outlive me. When my 2-year-old son will be, you know, at an age respectable enough to watch my movies, वो देखेगा। मुझे नहीं पता मैं 5 साल, 10 साल, 20 साल, कितने साल जीने वाला हूँ। तो लेगेसी ब्रांड क्रिएट करने के लिए यू हैव टू विन हार्ट्स, यू हैव टू विन द ट्रस्ट एक्चुअली। वो ट्रस्ट जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं जिस चीज़ को प्रिविलेज बार बार कह रहा हूँ वो वाकई में प्रिविलेज है। मैं जिस प्रोफेशन से आता हूँ, अगर मैं पीछे मुड़ के देखूँगा, मुझे टॉपल करके मेरा रोल लेने के लिए हज़ारों लोग खड़े हैं और वो कहीं ना कहीं हम सबके साथ भी ऐसा है। तो अगर सस्टेन करना है तो यू हैव टू विन हार्ट्स, यू हैव टू सॉर्ट ऑफ बी एम्पैथेटिक एंड, यू नो, ऑल दीस थिंग्स दैट आई सेड। तो मैं क्या ही दूंगा, मेरे से उम्र में इतने बड़े लोग बैठे हैं यहाँ पे। लाइक आई सेड एट द बिगिनिंग, मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीख के जाऊँगा, बट एक चीज़ मैं ये शेयर करूँगा कि बी काइंड टू पीपल, बी ऑनेस्ट विद योर जॉब एंड विन हार्ट्स। That is indeed beautiful, winning hearts. That's exactly what we are in the business of, trying to win hearts, trying to win over people. Thank you for that. मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल, आपके 12th में कितने नंबर आए थे? ये सवाल मुझसे पूछा गया है। मेरे 58% आए थे। मैं तो बहुत खुश हो गया था। मैं जब तक मैं स्कूल में था, आई वाज डूइंग वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, बट एज आई टोल्ड यू, माय फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज आई वाज वर्किंग एंड थोड़ा काम भी कर रहे थे, थोड़ा, यू नो, पढ़ाई भी कर रहे थे। तो यार, बट इन हाइंडसाइट आई विश आई डिड वेल
बिकॉज कहीं ना कहीं कभी कभी बैठ के मैं सोचता भी हूँ कि यार इफ़ नॉट एन एक्टर फिर क्या करते। बहुत बहुत ऐसा लगता है, बट नो कंप्लेंट्स। Yeah, no complaints indeed. None in the room, I can say. All right, so we will open the floor for some questions from the audience. जी सर। Deepa? सर सबसे पहले तो मैं कहूँगा आपकी मूंछें बड़ी कमाल की हैं सर। वाह। The mic is not working. Can we? Sorry. Yeah, it should be working now. So lovely. Thank you, Vikrant. Somewhere along the way, you said that all of us carry a facade with us, and that's for the external world. And if I may, because I've read something about you that you decided to drop that and take a break. And when I don't remember when that happened, but how did you have the guts to say enough? I'm going to take a break and then come back. What went behind it? Firstly, I hope I haven't offended anyone when I said we all have a facade. मेरे कहने का मतलब यही था कि हम सब एक्सटीरियर जो बाहर की दुनिया है उसके लिए हम सब एक गार्ड जिसे हम कहते हैं, facade is a little derogatory, I apologize. हम हमारे गार्ड ऊपर होते हैं, so I hope I haven't offended anyone. मैंने उस समय ब्रेक इसीलिए लिया सर, 12th फेल मेरी फिल्म हिट हो गई थी, मैं थोड़ा सा बर्नआउट फील कर रहा था उस वक्त, क्योंकि एज एन एक्टर you're not just physically burning out, but you're emotionally and mentally also burning out, because you are putting yourself out there to be vulnerable when required, to exhaust yourself internally when required. तो वो होता है. The most important reason at that point was कि मेरा बेटा हुआ था सर. I was blessed with a boy, and like most of you now know कि घर से हम निकले थे सिर्फ पैसे कमाने के लिए. हमको लाख रुपए महीना कमाना था. हम दोस्त आपस में बैठ के बोलते थे कि लाख रुपए जिस दिन कमा लेंगे ना तो यार हम अमीर हो जाएंगे. सर ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ कर लिया सर, घर बना लिया, दुनिया देख ली, एक सपने जैसी जिंदगी जी रहे हैं. जब बेटा मेरा हुआ, जब उसने पहली बार पापा बोला मैं नहीं था, जब वो अपने पैरों पे चलने लगा मैं नहीं था, जब पहली बार उसका दांत निकला मैं तब घर पे नहीं था. तो पूरी मेमोरी जो थी ना वो फोन पे थी. फिर बाद में बैठ के ये एहसास हुआ कि यार असली कमाई जिसकी हम बात कर रहे थे, असली कमाई ये है. तो ठीक है, एक्टिंग तो भूलेंगे नहीं, उम्मीद है कि लोग भी शायद भूलेंगे नहीं, क्योंकि बहुत लोगों ने ये भी कहा था आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड. मैंने कहा देखो देखी जाएगी, ये वक्त वापस नहीं आएगा, मुझे उसके पास वापस जाना है और मुझे घर का खाना खाना है, मुझे दोपहर की नींद लेनी है. तो उन सारी चीज़ों के लिए मैंने 8 महीने का ब्रेक लिया था सर, एंड आई वेंट बैक होम एंड थैंकफुली पीपल हैवंट फॉरगॉटन मी येट. विक्रांत, आई हैव टू टेल यू, मेरे पास एक सवाल था कि आपके लिए सक्सेस क्या है, लेकिन आपसे बात करते हुए मुझे पता चला कि आपके लिए सक्सेस क्या है, तो मैंने वो सवाल नहीं पूछा. बिकॉज आई कैन सी हाउ बैलेंस्ड योर अप्रोच इज टुवर्ड्स सक्सेस एंड इट रेजोनेटेड अ लॉट विद मी. थैंक यू. कि उसका अंत नहीं है कोई, राइट. जो मैंने लाख रुपए वाली बात की, आई एम श्योर बहुत लोग यहाँ पे होंगे वैसे. हम कॉलेज में तो बोलते लाख रुपए मिल जाए, तभी डेवू की एक गाड़ी आती थी सर, CLO करके. मेरे पड़ोसी के पास वो गाड़ी थी, तो उसकी गाड़ी को ना मैं जब भी नीचे उतरता था मैं ऐसे ग्लांस दे के जाता था कि यार ये गाड़ी होनी चाहिए मेरे पास. तो सपने तो बदलते रहते हैं, लेकिन वो जो एक चीज़ें होती हैं वो कभी नहीं बदलती हैं अंदर. एनीवे सॉरी, we'll move forward. Yeah, hi Vikrant. Sorry, I got you. Oh, hi. So I have a very simple question. Ji. Like during a discussion, you told like selecting a script is the core thing that very much is necessary for actor. So here we are having all the researchers are there, and today many people have won the awards also. So just I am offering something. Like all the researchers, they will do some predictive analysis on the audience behavior, and they prepare a script for you, and they will offer you. Still, do you go by your primary instinct or by that data? Amazing. Very good question.
सर जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एक फिल्म को सिलेक्ट करने में। मैं कोशिश करूँगा जितना सिंसियर रह पाऊँ इस जवाब के साथ कि व्हाट इमोशन इट अवेक्स विद इन मी, क्योंकि सर डेटा के हिसाब से हमारे पास बहुत सारी फिल्में आती हैं। जो मैंने बहुत ही ब्रीफली इस टॉपिक पे टच भी किया था कि लोग आपके पास गिमिक्स लेके आते हैं कि ये चल रहा है। मैंने वैसा अब तक तो कोशिश नहीं की है करने की। तो अगर आप अच्छी कहानी लाएंगे मेरे पास जो मेरे दिल को छुएगी, जो मुझे लगेगा कि मेरे वक्त के काबिल है, और फिर हम मिलके अच्छा डायरेक्टर भी ले आएंगे जो उस फिल्म को अच्छा भी बना दे। सो यू वांट टू ऐड समथिंग? Yeah, means you are saying that you will go by your primary instinct only. I will find the sweet spot in between. The idea is, it's an amalgamation of so many things, right? एक अच्छी कहानी, एक अच्छा डायरेक्टर, a little bit of data, a little bit of money, बहुत सारी चीजें लगती हैं फिल्म बनाने में। Yeah, बिल्कुल जैसे हम डिसीजंस लेते हैं, some insight which is fed by a lot of consumer work that we do and the gut that we have, all of it put together in a decision, exactly that. Thank you. Thank you. आप मेरे जवाब से खुश नहीं लग रहे सर। Sir, congrats to you on behalf of all of us once again. Thank you. I think you passed doctorate with the 12th fail. Thank you so much, sir. That's so generous of you. Thank you. So one of the point which I observed is in film industry, if you really see years back, you know, the lot of the heroes that we survive for mostly 5 to 10 years. That is a hero. After that, you know, they have to go to take the role of father, grandpa, and all. But nowadays, usually we see, even we are still seeing stuff like Shah Rukh Khan, even Amitabh Bachchan still play the hero. This is not only in Hindi, but it's happening in other film industry also. Even if you see Rajinikanth, he is actually still at 70, he is a hero actually. Okay, so this on the other side, actually, if you see the youngsters who are come, is it a blocking or how you really manage the scenarios? It's such a wonderful question, and the examples that you've given, I think there has been a massive shift, right? क्योंकि अभी मैं एक स्पोर्ट्स की एनालॉजी भी इस पे जोड़ता हूँ, if I can add a little Hindi if you're comfortable with it. 20 years ago, when a cricketer hit 35, we would automatically assume that he will retire, right? 32, 35, you had players like Azharuddin, you had players like Jadeja and all these people we grew up watching. By the time they were 35, हमें लगता था यार ये तो बुढ़ा हो गया, इसको निकालो। ये सच है। सिनेमा में भी पहले ऐसे होता था। But now that shift has happened because, and it's a great shift. It's a great shift that's happened. See, in Hollywood it was always there. Like you always had a Bruce Willis saving the world even when he was 50, 55. God bless him, you know, he's going through major illnesses. Maybe it's far more real now, the kind of storytelling, and also there is this likability, right? You want to watch Rajni sir, you know that he's got no hair, but you also, and he's so humble about it, he moves around the world the way he is, but when he's playing a part, you also resonate with what he's doing. Or with Amit sir, Amitabh ji, longevity is something which these people are testaments for. I aspire to have that. You know, I'm 22 years down, but I also recognize I'm just 38. So there is still a long way to go. So longevity is key. These people have had that impact on us, and thank God for that. Because people like the names we are talking about are very few and far between, right? और रहा सवाल एक उम्र के आने के बाद बाप के रोल करने का, सर वो मुझे भी करना पड़ेगा. And I will be okay with it. I don't think that will be a problem. Adaptability is key, sir. Adaptability. Okay, मुझे नहीं लगता और कोई सवाल पूछना चाहता है. Oh, okay, here we are. We'll take one last question. We'll also let two questions. We'll also let sir Okay, because two he questions. raised his hand. This lovely conversation. मुझे आपसे पूछना था कि this is a craft.
जैसे हमें रिसर्च का क्राफ्ट है या ब्रांडिंग का, इन योर ओपिनियन व्हाट इज इट दैट यू रियली वांट टू एनहांस, एलिवेट, उसमें और क्या काम करना है? व्हिच स्किल यू रियली वांट टू वर्क ऑन? बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बताइए। नहीं, एक बताना मुश्किल है बिकॉज यू नो like you said, any form of craft is an amalgamation of so many things put together. Like it's like cooking a meal. तो कोशिश क्या है? कोशिश ये है रेजोनेंस बढ़े। जो कहानियाँ मैं कहना चाह रहा हूँ वो लोगों तक पहुँचे, क्योंकि अच्छा उसका कोई पता नहीं, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। वो ट्रायल एंड एरर पे ही चलता है। रेजोनेंस बढ़े, एक ट्रस्ट फैक्टर बढ़े कि जब मेरी कोई फिल्म आई है तो लोग अपनी मेहनत से कमाए हुए वो पैसे और अपना समय निकाल के थिएटरों तक जाएं और मेरी फिल्में देखें। अब वो कैसे होगा मुझे भी नहीं पता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ मैंने पहले कही थी कि अगर मैं आपके दिल में उतर जाऊँ तो शायद मैं ट्रस्ट मैं आपका जीत पाऊँ। फिर बाकी चीज़ें तो होती हैं कि आवाज़ हो गई या बॉडी हो गई, सिक्स पैक हो गए, या कोई नया हेयर कट हो गया, या कोई नया लुक हो गया, कोई प्रोस्थेटिक्स कर लिया या कुछ कर लिया, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बट रेजोनेंस इज समथिंग which I'm chasing constantly, you know, to find that resonance in you and to win your trust. थैंक यू। Thank you. Thank you. Right. Since I have the last question, let me ask the question. I'm a huge fan of yours. Thank you so And, much. Thank you. So I have a question for you as a fan, not any of these corporate questions. What movies of yours should we look forward to this year? Oh, that's so kind of you. So, there are a few, but there are only a few that I can talk about right now. There is one film called White, which I've already spoken about. There's one film called White. I've had an honor, a privilege to play Gurudev Shri Ravi Shankar ji in that film. I'm playing his part. It's briefly, it's a very brief part of his life. It's not a biopic. On the Colombian Civil War in South America and his contribution in sort of mediating peace there. And then I finally landed a Dharma film. And yeah. Well done, Dharma. Thank you. Finally landed a Dharma film. I'm doing Dostana too. Thank you. So जो स्किल सेट की आपने बात की, अभी आप मेरे को वहाँ पे डांस भी करते हुए देखेंगे उस फिल्म में. So that's there. And yeah. Thank you. We look forward to these. Thank you so much. Please देखना जाके सर. Please. क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ. ठीक है. ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है. बहुत लोग यहाँ पे डिसएग्री भी करेंगे. मैं भी अपने आप से कई बार डिसएग्री करता हूँ कि मैं पेड पीआर नहीं करता सर. तो मैं सिर्फ गुजारिश ही कर सकता हूँ कि प्लीज़ आप जाके मेरी फिल्में देखें. अभी तक आई एम होल्डिंग ऑन कि मेरे काम के ज़रिए मैं आप तक पहुँच पाऊँ. मैं नहीं चाहता कि मैं वो रास्ता लूँ जहाँ पे मुझे एक परसेप्शन बनाना पड़े कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ या मैं बहुत बड़ा सक्सेसफुल आदमी हूँ. तो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ मैं. प्लीज़ आप लोग मेरी फिल्में देखें जाके. Thank you. Thanks a lot, Vikrant. I think it was a mix of inspiration, some fun, and some very, very deep perspective there. Thanks a lot for being your true, authentic self and being sharing your real, honest stories with us. Thank you. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. Thanks a lot. Thank you. Yeah, you can take this back.